Okay, friends, good afternoon to all of you. You see, you are teaching theory subjects and you are also conducting practical in the laboratory workshops. And as a teacher, you might have encountered few of the problems. Uh, you might have faced certain problems while teaching theory subject or while conducting practical, isn't it? So, can you name some of the problems which you have faced? You see, all of us encounter number of problems when we play the role of a planner, manager, or even a teacher teaching in the theory subject or in the laboratory. So, can you name problems? Yes. Huh? Lack of facilities. Okay. Any other problem? Say your students are not motivated. You want to know. So they are not performing well. Okay. So any other problem? Huh? Language issue. So एक ही class में you have to teach the mixed group with different qualification. So you need to know which method will be suitable for them. Okay, which teaching style will be suitable for a particular learning style of the students. Okay, you want to know whether I should teach with multimedia. If I teach with multimedia, what whether the performance of the student will be enhanced or not. Okay, or say I want to make groups in the workshop, should I make a group of 4 students or 2 students? So which group will achieve better score? So all of us, you see, face number of problems. So for finding solutions to these problems, you need authentic information on the subject. Okay, and in case that is not available, it means you must possess certain skills for investigating the problem systematically and scientifically. Okay, investigate, it means you need to know or you need to acquire certain skills of conducting research in the problems of technical education system, because you have mentioned number of problems which pertain to technical education system. So we need to conduct research, and I said that research is systematic. Why systematic? Because it comprises of a series of steps. Okay, and it involves scientific method of inquiry. You cannot just jump at the conclusion by looking at the problem that this could be the only solution. So you have to employ a scientific method of research. So in this particular session, we will learn about the process of research, the types of research, and the different kinds of problems which you as a researcher have faced while carrying out your ME thesis or PhD dissertation, and if you are guiding your students. Okay, so what kind of problems you are facing when you are guiding your students. So let me share my PPT. So research methodology, I'll provide you an overview. How many of you have completed your MTech dissertation? 1, 2, 3, 4, 5, 6. And have you undertaken some problem for the thesis also? Yeah, tha na? So have you studied research methodology also? Okay. So I'll give you an overview. First of all, let us have a look at what is research. What is research? Can any one of you? Search again and again. Okay. Any other person? Finding solution to a problem, answering a particular question or query. Okay, your students are not giving their attention to you, so I want to know what is the reason. Okay, why students are not performing well as you have said, so I want to know the factors responsible for
the students' poor performance in your subjects. Okay, so research very you see एक जबरदस्त डेफिनेशन मैं आपके सामने रखा हूं. What we are doing when we do not know what we are doing, this is research. Can any one of you elaborate on this? Yes. During a problem, certain problem, we know the problem, but we don't know the solution. But we are trying and hit and try method, and we are trying to get at least get where somewhere. Very right. Any other person? आप कुछ बोलना चाहेंगे? Same the thing. We are searching to a particular thing again and again. We don't know the solution. Right. Very right. And if we knew what it was there, what it was we were doing, it would not be called research. पहले से अगर solution आपको पता है, then it is not research. Now coming to who is a researcher? Who is a researcher? A person who is doing Who is doing research is a researcher. Who is willing to write, who is willing to perform n number of solutions, who is willing to put an effort to come up with something to do for something like this. A person who knows more and more about less and less until he knows everything about nothing. He has to go to my to very deep. Okay, so who knows more and more about less and less. He can say with confidence about my topic, I know the best, and अगर ये नहीं हो रहा है तो अभी किसी से नहीं होगा. हाँ. So it means he has an open mind. He doesn't you see he always consult his friends, his teachers. So ये नहीं कि वो अपने तक ही सीमित रखता है. He has an open mind and he discusses with everybody about the problem. So he gets certain clues, and on the basis of clues he prepares his plan. So research is a physical process of collecting data plus the mental process of deriving the answer to your question from the information you gathered. Searching for a clarifying explanation or search for knowledge, that is research, or it is an systematic investigation with an open mind to establish novel facts, solve new or existing problems, prove new ideas, or develop new theories. So, as a researcher, if you want to pursue your PhD, please don't limit yourself to your supervisor only. Please consult with other, you see, researchers who are carrying out some research in that particular area. So you will get lot of information from them. Attend certain seminars, conferences. You will get certain problems from there also. Now you have come here. Please, you can discuss your own research problem among yourself. Okay. So systematic process. Why systematic process? Because first of all, you need to, you see, identify a research problem. And before identification of a research problem, you need to sense that there exists a problem. Sensing ability होनी चाहिए कि आप जा रहे हैं and you have observed certain, you see, shortcoming. तो आपके माइंड में वो आना चाहिए कि भी why this is happening. हाँ, सो इसका मतलब कि पहली जो रिक्वायरमेंट है रिसर्चर की, उसमें सेंसिंग एबिलिटी होनी चाहिए दैट देयर एग्जिस्ट ए प्रॉब्लम एंड देयर इज ए नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. उसके बाद यू विल यू सी डिफाइन द प्रॉब्लम, एंड डिफाइन करने से पहले यू विल ऑल्सो रिव्यू द लिटरेचर, व्हाट अदर्स हैव डन. तो आपका स्कोप ऑफ जो रिसर्च है वो क्या होगा, what would be your objectives and the hypothesis. And after you see identifying the research problem, you will select the research design, that is the research method, then sampling technique,
and then you need to develop certain tools for collecting the relevant information. You will administer those tools, you will collect the data, analyze the data with suitable statistical techniques, and then interpret the results. So it is a systematic process, and it involves scientific method of inquiry. Okay, you cannot reach just you cannot just jump at the conclusion कि भाई ये conclusion है. No. So research is the way by which we solve problems that bother us in the workplace or in the environment, in our attempt to push back the frontiers of knowledge and replace them with new ones. Science of studying how research is done scientifically. So, research methodology is a process that helps the researcher not only to understand the products of scientific inquiry, but you are also, understanding the process of investigation also. So, core of research is the problem, because if there is no problem, then how we can solve the problem? So, what is problem? Can you define what a problem is? यूज कर रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में ड्रग्स अवेलेबल है उनकी क्या शॉर्टकमिंग्स, और मैं उसमें अपना क्या ऐड कर सकती हूँ जो वो शॉर्टकमिंग्स कम हो जाए. कम हो जाए. ये तो आपने एग्जाम्पल्स बताया, बहुत अच्छा. लेकिन सिंपल मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम, समथिंग दैट बॉदर अस. प्रॉब्लम इज ए गैप बिटवीन what you want to do and what you actually do. ठीक है, that is a gap. So it's a perceived gap between the existing state and the desired state, or you can say a deviation from a norm, standard, or status quo. Or it is a question which is raised for inquiry: what can I do to motivate my students to learn? What are the techniques? Okay, why students are not giving their attention? Why students handwriting ability is very poor? I need to understand the causes, reasons. देखा ना आपने क्लासरूम में देखा, you have drawn a very neat sketch on the chalkboard, but your students have not drawn the sketch very well. What are the reasons? Can you carry out small piece of research? So a complex unsettled question. So some difficulty which a researcher experiences in the context of either a theoretical or conceptual situation and wants a solution for it. It exists when the individual or the group having one or more desired outcomes are confronted with two or more courses of action that have some but not equal efficiency for the desired objectives and are in doubt about which course of action is best. Say, I am talking about the poor drawing ability of students. That is the problem. Now, you have analyzed that problem, or you have discussed with your other colleagues. Some factor is that some factor may be that you are not giving feedback while they are making the diagram, or when you are drawing on the chalkboard, your own handwriting is not up to the mark. This could be one reason. You are not giving sufficient time to the students to draw the diagram. Another reason, or they don't have the drawing tools with them. Okay, number of. Now you have to prepare action plan for each of those factors, and then see the results. Then you will know that if I employ this technique, their drawing ability can be improved. So there are number of solutions available. Now you need to know which solution will provide optimal result. So different courses of action. So what do we do with problems? You have sensed a problem, but your willingness is very low. So ignore them, sense them, and talk about them. Bother कर रही है आपको problem.
and try to solve them. Now coming to certain, you see, I'm giving you certain illustrations. Mr. Ramesh prepared a paper on modularized instruction after reviewing literature on the subject available in his college library and called it a piece of research. So, your comments, please. Is it a piece of research? The review article. It's a review article. Had he studied the effectiveness of modularized instruction on the achievement of students in a particular subject, then it could have been called as a research. You see, you have prepared the self-learning module, say in mathematics. Now you want to study whether these module will enhance the performance of students in the mathematics. What you will do, you will conduct a small experiment. How you will do, how you will conduct the experiment? Say now there are 24 students sitting here. I will divide this group into two subgroups randomly, because in an experimental research study you need to form randomized uh, groups. Why randomized? Because in a random uh, uh, sampling, every member has an equal probability of being selected in either of the two groups. अगर मैं बोलूं कि इधर वाले ए ग्रुप बन गए, इधर वाले बी ग्रुप बन गए, दिस इज रॉन्ग. हो सकता है इधर वाले में सारे ही इंटेलिजेंट हों, इधर वाले में सारे ही एवरेज हों, राइट? So I'll form two groups randomly. Then I'll prepare one quiz on that topic. Now I'll administer that quiz to both the group in the beginning of the experimentation to know their pre-achievement score. Then to one group I will teach that topic through lecture mode, and the other group will be exposed through self-learning module in that topic. I will not be teaching. Then at the end of the experiment, I'll again administer the same quiz to both the group to know the gain of these students in both the groups. So this is the research study. Mr. Sumesh says that he has researched and completed a document which gives information about the age, qualification, teaching, and industrial experience of all engineering college teachers in his state. So, your comments, please. He has compiled the data. Compilation है सर ये. Had he studied interrelationships, age, qualification का, teaching effectiveness का, industrial experience का, तो वो research कहलाई जाती है. क्वालिफिकेशन को टीचिंग एक्सपीरियंस से कोरिलेट करके तब Yes, ये तो उसने सिर्फ डाटा कंपाइल किया है. He himself says that I have researched. This is not research. He has simply compiled the data. Mr. Anil participated in a workshop on curriculum development and prepared what he calls a research report on the curriculum for building engineers. He did this through a literature survey on the subject and by discussing with the participants of the workshop. Yes. Again, it is not research. सबमिटिव है सर ये टाइप को कंपाइल करके दे दिया. दे दिया. So curriculum research में कैसे होती है? You need to survey some of the industries in a particular discipline. You need to ask them what type of competencies they require of a civil engineer. Okay. Then you need to study the existing syllabi, whether the existing syllabi you see helps the students develop those competencies or not. तो ये सारा इट मीन्स इट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, इट इन्वॉल्व साइंटिफिक मेथड ऑफ इंक्वायरी. सो इस तरह से जो करिकुलम है वो डिजाइन होता है या रिवाइज होता है, ओके, या जो है रिव्यू होता है. नाउ कमिंग टू व्हाट इज मोटिवेशन इन रिसर्च. यस, क्या मोटिवेशन है रिसर्च में? टेक इट बाय चॉइस नॉट एज एन ऑप्शन. हाँ, आप शुरुआत तो ड्रीम से करते हैं लेकिन वो अंत में आगे खत्म हो जाता है ना, इसलिए आप उसके अगर आपने कोई चीज चॉइस के रूप में लिया तो उसके लिए रोज कितना कुछ करते रहोगे. लेकिन अगर सो मीन्स जो एक तो विलिंगनेस है मोटिवेशन में, अगर आपकी विलिंगनेस है देन यू विल डेफिनेटली अंडरटेक इट एंड यू विल
give your continuous effort. Okay, मोटिवेशन और क्या है? यस, आई हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना, ये मेरे को आता है दैट आई हैव डन समथिंग फॉर द सोसाइटी, और आई हैव डन समथिंग फॉर माय स्टूडेंट्स, और मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगता है, और मुझे हो सकता है मेरे सिस्टम में 2 या 3 इंक्रीमेंट भी मिलती हों, इसीलिए भी मैं रिसर्च करता हूँ, है ना। कई बार पता आपको नई रिसर्च कॉन्सेंट्रेट करने आते वो उस जगह पर, इसलिए आप मोटिवेटेड है, उसके लिए आप काम कर रहे हैं कि अब आपको लगता है कि भाई मेरा डिपार्टमेंट जो है मुझे जो है किसी आईआईटी में या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पेपर प्रेजेंट करने के लिए भेज सकता है, देयर इज अ फैसिलिटी, सो यू आर राइटिंग, यू आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड यू आर प्रिपेयरिंग a paper. So motivation is you get a research degree along with its consequential benefits, that is employment condition भी हो सकता है, जैसे से कई इंस्टीट्यूशन में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इज मैंडेटरी, कई जगह पर अब पीएचडी मैंडेटरी है, उसके बिना आप नहीं ज्वाइन कर सकते, and you are concerned over practical problems, so that helps you to undertake the research, that you are very much sensitive, आपको कुछ ना कुछ बॉदर कर रही है, वाई दिस इज हैपनिंग। एक तो है कि ठीक है मेरे को तो तनख्वाह मिलती है, मैंने अपना पढ़ाया और मैं चला गया, लेकिन मेरे कुछ आप में से कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं यार, ये बच्चे जो हैं ये इनकी लुक्स ब्लैंक हैं, और जब मैं बोलता हूँ तो ये कुछ जो है वो अपना अटेंशन नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या है कि मेरी टीचिंग में फ्लॉज हैं, मेरी टीचिंग उनको इंटरेस्ट नहीं कर रही। इट मीन्स या तो मैं टॉपिक को आई एम नॉट रिलेटिंग विद द एग्जाम्पल फ्रॉम देयर डेली लाइफ, और आई एम नॉट रिलेटिंग द कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल फ्रॉम द वर्ड ऑफ वर्क। से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पढ़ा दी, बच्चा कहता है मैं क्यों पढ़ूं, क्या मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कोई प्रॉब्लम या सिविल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम वो बताई कि भी यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कहने को वो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, हाँ, लेकिन हम पढ़ाते कैसे हैं, प्योर मैथमेटिक्स की तरह। आप में से कोई है मैथमेटिक्स के, है ना, होता है ना ऐसे, आप क्या पूछते हो, डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग, इंटीग्रेट दी फॉलोइंग, यही क्वेश्चन है, तो क्या हमने उसको एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल दिया, नहीं दिया, तो वो देना बनता है, इससे उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, and you get intellectual joy of doing some creative work, and you be of service to society and get respectability. Or sometimes there is some instruction from the government that you conduct some small piece of research या सर्वे कीजिए अपने कॉलेज में। ये कई बार गवर्नमेंट का डायरेक्टिव आता है, what you do, you prepare some questionnaire or some tool and you collect the data and then analyze the data and prepare the report, submit to the agency। तो कई बार ये डायरेक्टिव भी होता है। Now qualities of good research or characteristics of good research. Firstly, research begins with a query. Why? That bothers the researcher. ठीक है, आपने अभी मुझे कई सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करी हैं जो क्लासरूम में आपने फेस करी हैं। Research identifies a problem and then you need to state in a very clear and unambiguous term, मतलब कि जो रिसर्च की स्टेटमेंट है इतनी क्लियरली स्टेटेड हो कि लेमैन भी उसको पढ़े तो उसको लगे कि रिसर्चर ने इसमें ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। क्लियर वर्ड्स, it must be planned, it means you need to prepare a proposal before undertaking research. Proposal, why proposal is essential? वर्क ऑफ एक्शन क्या, वो किस प्लान से काम करना है, आप किस डायरेक्शन में, What do you include in the proposal? एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के लिए एलिमेंट सिनेरियो लेते हैं, पर अपना रिसर्च आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, मेथोडोलॉजी कंसीडर करते हैं, और फिर उस पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लेते हैं कि इससे क्या क्या आउटकम्स आएंगे हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, एंड देन फ्यूचर। तो अगर प्रपोजल
बहुत अच्छी लिखी गई है, then there will be less deviation when you actually carry out the study. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, you need to spend lot of time in preparing the proposal. ये नहीं कि आपने जस्ट स्टेप्स देख लिए और उसको लिख लिया. Pros, cons, even small pilot study you can also conduct. Can I collect the data? से मैंने टॉपिक में लेना चाहता हूँ एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट. आई वांट टू स्टडी द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज. नाउ ये क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कौन से टूल बनाऊंगा, पहले मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन सी इंडस्ट्री मुझे अलाउ करेंगी, पहले मुझे सर्वे करना है. हाँ, कई बार तो कई इंडस्ट्रीज तो कहती हैं भैया बाहर जा, हम अपनी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं आपके साथ शेयर करते. इट मीन्स आपको उनमें कॉन्फिडेंस लेना है कि भैया ये जो डाटा है इट विल बी यूज ओनली फॉर द रिसर्च पर्पस, इट विल नॉट बी यूसी गिवन टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन. फिर टूल, कहाँ से टूल, मान लीजिए आपने कोई रिसर्च स्टडी बनाई, उसके लिए यू नीड ए सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ वेरी कॉस्टली. पहले से प्लान करना है प्रपोजल बनाते समय. And software is available say in IIT Kharagpur. Can I go there? You need to ask certain questions while making a plan. So research must be planned and is based upon facts. It is a scholarly investigation that is ensures that researcher understands the subject area and has a deeper understanding of the topic, which allows for greater understanding and ability to interpret and critically analyze the data. Now there are certain areas where there is nothing to you see research, already saturation is there, लेकिन फिर भी आप काम करना चाहते हैं. नो, आपका एक नया एरिया है जो इमर्जिंग एरिया है. बिफोर टेकिंग अप दैट एरिया यू नीड टू स्टडी डीपली इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. कुछ पेपर्स पढ़ेंगे, रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे, then you will conduct the study. So generates valid data. It research guides decision making because आपके पास चार ऑप्शंस आए, चारों में से आपने एक्शन रिसर्च किया एंड यू हैव कम आउट विद द कंक्लूजन कि भी मैं ये फॉलो करता हूँ, देन आई विल गेट दिस ऑप्टिमल रिजल्ट. सो यू विल मेक डिसीजन. एंड रिसर्च इज ऑलवेज goal directed. It is purposive. There is a purpose behind it. So purpose that is meaningful, not just to get the degree or for personal status. It is systematic and scientific method of inquiry and response to challenge. Good research stands up to the questioning and criticism of others. It is after you complete the research, you will present your results. Then people will ask question, you will need to defend. Okay. And sometimes some research problems you have found the solution, but these solution give rise to some more unexplored questions also कि भैया मैंने यहाँ तक किया है, future researcher can take up this thing. Okay. So you can draw conclusions. Now coming to research methodology, that is for conducting research, a researcher goes through 4 stages. One is preparing a research proposal. This is the first stage, and this involves why of research. That is at this stage the researcher describes why of this research, that is the need and significance. पहले आप टर्म्स डिफाइन करते हैं, राइट? फिर आप रिव्यू करते हैं एंड देन यू आइडेंटिफाई द गैप्स बिटवीन द रिव्यू. ओके, एंड देन यू राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च और सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम और इमर्जेंस ऑफ द स्टडी और इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, कुछ भी हेडिंग ले सकते हो. सो व्हाई ऑफ स्टडी, देन व्हाट ऑफ स्टडी, व्हाट ऑफ रिसर्च. So here the researcher writes down the statement of the research problem, or sometimes he writes the research questions.
कुछ रिसर्च क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं. So research questions in the form of question and objectives in the form of statement, and then you formulate hypothesis. Hypothesis क्या होते हैं? Guess answers. Okay, that there exists significant difference or there exists significant relationship. Okay, and ये जो hypothesis है, you formulate null hypothesis or the directional hypothesis. The base is the review of literature. ठीक है, अगर रिव्यू में बहुत सारी स्टडीज हुई हैं एंड दे आर गिविंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, वी फॉर्मुलेट डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, and if there are contradictions between the research studies, then we go for null hypothesis. ये आपने पढ़ा होगा. And then we write how of that particular research, that is the methodology, research design. अगर तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी है, यू विल गो फॉर सर्वे. अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी है, यू विल आइडेंटिफाई द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, देन यू विल गो फॉर ए पर्टिकुलर रिसर्च डिजाइन. फैक्टोरियल डिजाइन है, कौन सा डिजाइन है. और इफ इट इज you see post facto research, then you go for ex post facto research study. Then you will also identify the method, the sampling technique, कितना सैंपल लेना है. Then tools, if the tools are already available, उनका आपको reliability validity coefficient भी बताना है. And if the tool is not available, then you need to develop the tool also. You need to, you see, find out the reliability and validity coefficients. उसके बाद you will administer, वो आएगा second stage, organizing and conducting research. So it means the research proposal is prepared. The researcher presents the research problem in front of the faculty colleagues or research board in case of a PhD degree. So conduct of research is only after approval by the department or by the supervisor or by the board of studies or by the funding agency. Say you have submitted some research proposal to IST or DST. You have prepared the proposal and you have submitted, doesn't mean that you will get the funds. They will see, they will evaluate the research proposal, and only then they will grant you approval and pay, send you the funds. So if the proposal is well written, then there will be very small deviation when you actually undertake the research. Data is collected, data is analyzed. Now coming to the third stage, writing a research report, wherein you write the findings. And before writing the findings, you will give the, you will discuss the results. आपने रिपोर्ट किया that I have found significant difference, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करने के समय आपने वो लिखना है कि कौन सी रिव्यू, जो आपने रिव्यू किया हुआ है, कौन सी रिसर्च स्टडीज आपकी रिजल्ट्स को सपोर्ट कर रही हैं या आपकी रिसर्च स्टडीज को के जो है वो एंटी हैं, वो आपको वहाँ लिखना है. एंड व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस व्हाई वी हैव ऑब्टेन्ड दिस रिजल्ट, ये डिस्कशन है. देन फाइंड रिसर्च फाइंडिंग, एंड फाइनली you will write the industrial implication or educational implication, कि इसकी actual applications कहाँ होंगी. यहाँ तक हम करते हैं. And the fourth stage we generally forgot, evaluating research, finding any gaps, weaknesses in our study to modify the study and improve research in the future, suggestions for further research. This is the fourth step. So these are the four stages of conducting a research. So selecting and defining the research problem, this is the first competency which we expect of a researcher, that is he carries out a review of literature to specify the problem or to write the research question or to formulate research hypothesis. Then describing the methodology of research means selecting an appropriate research design
suiting to the nature and purpose of the study, selecting sample, developing instruments or selecting instruments. Developing instrument means you have to standardize also, that is validity, reliability भी निकालनी है. Then collecting the data means administering the instruments, recording data, scoring data, tabulating data. Analyzing and interpreting the result means that selecting appropriate statistical tools to analyze the data and then arrive at valid conclusions. So मैं यहाँ पर एक आपके सामने एक रिसर्च प्रॉब्लम रख रहा हूँ. So a director of technical education was concerned with the complaints received from the public works department that the civil engineering technicians trained by a technical institute lacked practical skills. So a director of technical education got this feedback from public works department. Now, अब as a researcher, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन या उसका सबऑर्डिनेट वो कैसे प्रोसीड करेगा, बताइए. करना पड़ेगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो स्टूडेंट्स का फीडबैक लेना कि कहाँ पे गैप रह गया है, और उसको पूरा डायग्नोस करके रिपोर्ट में देगी कि कहाँ कहाँ हमारे जो भी गैप्स रह गए हैं उनको फिल कर लेगी, हमें क्या क्या करना है, एक्शन प्लान. इन्होंने कुछ बोला, कलेक्शन ऑफ डाटा से पहले क्या होगा, यू नीड टू प्रिपेयर अ टूल. ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने फीडबैक लेना है तो आपको एक जो है टूल डेवलप करना पड़ेगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है. हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से अलग तरह की इंफॉर्मेशन होगी, टीचर से अलग तरह की होगी, स्टूडेंट से अलग. सो इट मींस यू नीड टू डेवलप 3 डिफरेंट टूल्स. सिलेबाई को भी स्टडी करना पड़ेगा, उनकी फीडबैक जो वो किस तरह से आई है. सो ही ऑब्टेन्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, that is principals, technical teachers and other relevant quarters to identify the various factors influencing the problem. He formulated the hypothesis, he formulated the problem and generated hypothesis, constructed questionnaires and obtained requisite information from a representative sample of employers, teachers, pass out students. Representative सबसे collect करना मुश्किल है, so we draw a small sample, then analyze the data collected and interpret the results in the light of the hypothesis and reached conclusions. So in this particular example, you will notice that researcher employs a series of steps. So it means research is systematic. The researcher did not just jump at the conclusion but employ a scientific method of inquiry to reach at the conclusion. So science research is scientific. So research is systematic, research is scientific. Why systematic? Because there are number of steps. Scientific method of inquiry, both inductive and deductive reasoning. So understanding the nature of the problem to be studied and identifying the related area, this is first step. Reviewing literature to understand how others have approached, collecting data, analyzing data, drawing conclusion. So this is the research methodology, that is problem identification, reviewing information, data collection, data analysis and drawing conclusion. So research is systematic and employs a scientific method of inquiry, that is an integrated use of inductive and deductive reasoning. What is inductive reasoning? Inductive क्या होती है? Shabash. Your name please? Swati. So she says that when we move from specifics to generalization, deductive इसका उल्टा है. Okay, generalization to specific. So both approaches are involved in you see scientific method of inquiry. Now coming to types of research. कौन कौन सी रिसर्च आपने सुनी अभी तक? टाइप्स ऑफ रिसर्च. आपने बोला कि भी आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ी है. चलिए
So research can be classified on the basis of purpose. Firstly, the basic research या फंडामेंटल रिसर्च. कुछ बुक्स में प्योर रिसर्च भी लिखा गया है, इसको नाम दिया है प्योर रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च और बेसिक रिसर्च. एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी एंड इट्स रिफाइनमेंट. जितनी भी फिजिक्स में ये जो लॉज हैं, रूल्स हैं, these are the result of basic research. These are applicable everywhere, है ना. न्यूटन्स के लॉज हैं, दे आर एप्लीकेबल एवरीवेयर. और ये जो बेसिक रिसर्च है, यहाँ से केमिस्ट्री में आप कर रहे हो, फिजिक्स में कर रहे हो, दिस इज कंडक्टेड, these researches are conducted in a purely laboratory controlled condition. That is, as a researcher you need to identify what are the variables you need to control while carrying out a particular piece of research. तभी वो everywhere it is applicable है ना. You need to identify human के ऊपर जो research होती है उसमें we cannot control all the factors, all the variables, but in pure research you need to conduct in a purely laboratory controlled condition. कहीं pressure को maintain करना, कहीं temperature इतना fix करना, वगैरह वगैरह. So it is conducted in laboratory setting and doesn't aim at solving a problem that needs immediate solution. Rather, these help in building up some theories. So fundamental research is concerned with formulation of some theory, law or principle and is conducted in a purely laboratory controlled conditions. For example, ये कुछ studies हमने ली हुई हैं. Study the effects of figural versus verbal materials on the learning of students in a laboratory setting. Studying the potential of utilizing LED for classroom lighting purpose. Study the effect of exposing engineering students to rock pop music on their performance. Use of NMR to study the physical, chemical and biological properties of matter. Use of MRI to study the pictures of the bone and internal tissues of the body produced by the machine. Pure researches. Applied research. It is concerned with application of theory or law. जो प्योर रिसर्च की जो थ्योरीज हैं, दे आर अप्लाइड. ओके, जैसे इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ बोथ द फिजिकल थ्योरीज एज वेल एज द साइकोलॉजिकल थ्योरीज, राइट. बायोकेमिस्ट्री, it is the application of chemistry. Okay, so testing of a theory to evaluate its usefulness or solving a practical problem. So this is aimed at solving a practical problem or testing a theory to evaluate its usefulness in a setting, that is finding out what works best. These are the example. Determine the opinions of teachers about the suitability of a newly introduced curriculum. Or study the effectiveness of two instructional methods on the acquisition of concepts in the basic electronic subject. Study the factors that lure students in taking engineering courses. How to reverse or manage global warming. What type of additives are acceptable or healthy for manufacturers to use in human food products. Applied research. तो क्यों हर एक के फीचर्स उनको पता है, then they have to study and test. Action research. It is concerned with solving immediate problem, solving specific problem in a specific situation. For example, while teaching in this class, I found that students are creating indiscipline in my class, and this is not in other classes. I then thought of 3-4 strategies. पहली strategy adopt करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी. Then I compared the results and then I come to conclusion, if I employ this technique, then there will be less of student indiscipline problem in the classroom. अब यही प्रॉब्लम मान लो किसी और क्लास में मैं फेस करता हूं, तो जरूरी नहीं कि जो मैंने यहां पर खोज की है वो मैं वहां लगा पाऊंगा, क्योंकि वहां पर
subject is different, students are different. ठीक है, so may or may not be you see applicable ये जो इस situation की, so that is why it is called as situational research. ठीक है, एक्शन रिसर्च मींस सॉल्विंग इमीडिएट प्रॉब्लम, और स्मॉल सैंपल पे की जाती है, तो इसकी जनरलाइजेशन जो है वो नहीं कर सकते. अगर लार्ज सैंपल में करते हैं देन यू कैन मेक जनरलाइजेशन, स्मॉल सैंपल पे जनरलाइजेशन नहीं होती. So for example, introduce an innovation of a CI by a teacher and study its effect on achievement of students in a subject. Determine why engineering students in a particular branch perform low in applied sciences. And another is developmental research, जिसको R&D बोलते हैं. So systematic work drawing on existing knowledge gained from research or practical experience that is directed to producing new materials, products, devices, to install new processes, system, service, and to substantially those already produced or installed. और इसको हम R&D भी बोलते हैं. For example, a study to determine the potential of using coconut oil as a substitute for linseed oil in production of latex paint, or fabricating low-cost innovative equipment for drying fruits using solar energy, or to develop an instructional material for students to teach abstract concepts in mathematics. तो डेवलपमेंट हमने किया, कुछ प्रोडक्ट तैयार किया, कुछ हमने मटेरियल तैयार किया, दैट इज R&D. So basic versus applied research, distinction is largely by the focus of its application. Basic formulation of theory, applied means application of theory in other situation to see their result. जैसे जो डिफरेंस बेसिक साइंस और अप्लाइड साइंस में होता है या फिजिक्स और इंजीनियरिंग में होता है, वही डिफरेंस है. सो बेसिक रिसर्च फोकसेस ऑन डिटर्मिनिंग और एस्टैब्लिशिंग द बेसिक रिलेशनशिप विद इन अ डिसिप्लिन without paying attention to any practical application, and applied research is conducted to solve a particular and concrete problem. इसको मैं छोड़. Now types of research based upon the method. रिसर्च मेथड, वो पर्पस के बेसिस पे 4 तरह की रिसर्च थी. वन इज प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च. एंड बेस्ड अपॉन रिसर्च मेथड, research is of 5 types. Firstly, it is historical research, descriptive research, which may include case study, survey, content analysis, correlation research, ex post facto research, and experimental research. So based upon these are the research methods. Now let us have a look at these one by one. Firstly, historical research. इससे आपको क्या अंदाजा हुआ? हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या आएगा? शाबाश, very nice, very nice. So historical research is concerned with the description of past events, and this is conducted to arrive at conclusion concerning trends, causes, or effects of past occurrences that may help explain present events and anticipate future events. Data is not collected through questionnaire because how you will collect the data? आज से 20 साल पहले कंडक्ट हुई है, जिनसे डाटा कलेक्ट करना वो बंदे भी पता नहीं जीवित है या नहीं जीवित. ओके, सो यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेलेवेंट रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल हैं, उन्हीं को आप स्टडी करोगे. ठीक है, तो एग्जांपल्स आर to study the practices followed in designing curricula of engineering education program during 1960 and 1980. ये स्टडी आपने करना है, तो इसके लिए you can meet the members of committees, you can study the minutes of various meetings held,
You can also read the curriculum reports, and then you will come out with a picture how on during those days the curriculum was designed. Study the trend of participation of women in technical education during 1950-1990. Study the progress of engineering education in a country during period 1990 and 2000. So historical research. Descriptive research. We study the present state of affair, testing hypotheses or answering questions related to current status of the phenomenon. Data is collected through questionnaire, interviews and observations. जैसे मान लीजिए मैंने आई वांट टू स्टडी द एटीट्यूड ऑफ टेक्निकल टीचर्स टुवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशन. So I will prepare a tool on teaching profession, attitude toward teaching profession. I'll administer to them. I have got a different sample. Some of you belong to mathematics, chemistry, pharmacy, English. Okay, so I can study, and there are gender differences also. There are female, there are male. So I can compare the attitude of technical teachers. और कुछ आप में से ME भी हैं, कुछ BTech हैं, कुछ PhD हैं. So it means I can study the attitude of technical teachers. So I'll conduct a survey. Okay. से इसमें कंटेंट एनालिसिस भी की जा सकती है. से यू वांट टू carry out the content analysis of a question paper. उसमें क्या देखोगे आप कंटेंट एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर में? कवरेज ऑफ कंटेंट कितना है और कितना बड़ा इन्वेंटरी होता है, कितने सारे सैंपल्स लिए, कितना डाटा लिया है, उसकी कलेक्शन लाइब्रेरी जो होती है उसको. नहीं, क्वेश्चन पेपर की मैं कंटेंट एनालिसिस बोल रहा हूँ. हाँ हाँ. और एम्बिग्यूटी कितनी है? हाँ. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिया है या नहीं दिया? स्कोप ऑफ आंसर कितना क्लैरिटी है, या जो आप एक्सपेक्ट करते हो स्टूडेंट से क्या वो स्टेटमेंट में क्लियरली इंडिकेटेड है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वगैरह वगैरह. इसी तरह आप से you have got 4 books in a library and you want to recommend one book to the students. तो आप कौन सी बुक रिकमेंड करोगे? You will do content analysis. लैंग्वेज कैसी है, इलस्ट्रेशंस कैसे हैं, सारे टॉपिक्स कवर हुए या नहीं हुए, हाँ, उसमें डायग्राम्स हैं वगैरह वगैरह. कंटेंट एनालिसिस. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आ सकते हैं. टू स्टडी द एटीट्यूड ऑफ टेक्निकल टीचर्स टुवर्ड्स स्टूडेंट यूनियंस, identification of occupational areas for emphasis in vocational education program planning, development of industry institute interaction in a technical institute, a study of performance of disabled engineering students in a particular curriculum program mainstreamed with regular students. ये आप स्टडी करना चाहते हो. Study the extent to which the physical resources provided in the institute are being utilized. The practices followed by the HOD of a technical institute in managing their department. तो इसके लिए सर्वे करेंगे. Correlational research. For example, you have got the marks of your students. 10th में आपके मार्क्स अवेलेबल है या +2 के मार्क्स अवेलेबल है. You want to predict their performance in the first semester. So you have got 10th marks or +2 marks and you have got first semester marks, right? उनकी correlation आप study कर सकते हो. So determine the degree of relationship between 2 or more quantifiable variables. Data is collected through questionnaires and standardized tests. Examples are
Study the relationship between +2 marks and performance of students in first year engineering program, or to study the prediction of success on the job based on grades obtained in the engineering program. Develop and validate a test to measure the ability to diagnose malfunctions in automobiles through auditory sense. Study the correlation between new employees' college grade point average and their first year performance reports. Correlation research. Ex post facto research. ये क्या होती है? Something has already happened and you want to study the reasons. Okay, ex post facto, you move retrogressively, establishing tentative cause and effect relationship, means after the fact. जैसे experimental research study में you are manipulating the independent variable. Here we are not manipulating because independent variable has already taken place. Independent variable or cause is not manipulated because cause and effect have already occurred. Examples: an analysis of the impact of on the job training of graduates on their job performance in industry. On the job training already provide की है, अब हमने उनका job performance measure करना है. Or the effect of socio-economic status on the self concept of engineering students. सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑलरेडी डेवलप्ड है उसके पेरेंट्स की इनकम की वजह से. इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग इन इंजीनियरिंग ऑन सोशलाइजेशन, और डिटर्मिनिंग द फैक्टर्स दैट लेड टू लो स्किल्स ऑफ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग ड्राइंग. आपने जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के आपके पास मार्क्स आ गए, आपने देखा मार्क्स बहुत पुअर हैं, नाउ यू वांट टू स्टडी द रीजंस. Investigating the effect of background education and training of teacher on their teaching effectiveness. In service teacher ट्रेनिंग किसी ने अटेंड करी है और उनकी टीचिंग इफेक्टिवनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ा. किसी चौराहे पे रोड एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं तो आप रीजन जानना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टडी आप कंडक्ट करें. तो दिस इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. कुछ ऑलरेडी हो चुका है, अब हमने इन्वेस्टिगेट करना है और फिर एक्सपेरिमेंटली आप वेरीफाई कर सकते हो. इसमें आपको एक कॉज एक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कई सारे सोल्यूशन मिलेंगे, तो उनको जो है वो कंसोलिडेट करना मुश्किल है. हाँ, आप स्टडी करेंगे, उसके बाद फैक्टर्स आ गए, उनको वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली करेंगे. एंड दैट इज द फिफ्थ टाइप ऑफ रिसर्च, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. सो at least one variable is manipulated to study the effect on the dependent variable. So there could be one variable, independent variable, there could be number of independent variable, there could be one dependent variable, there could be number of dependent variable. For example, मैं उदाहरण देता हूँ. To study the effect of flipped classroom on the achievement of students in mathematics. To study the effect of flipped classroom on achievement of students in mathematics. तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? I repeat, the effect of flipped classroom on achievement of students in mathematics. Which one is the independent variable? Effect of flipped classroom on achievement of students in mathematics. Flipped classroom is an independent variable. इसको आप ट्रीटमेंट वेरिएबल कह सकते हो, इसको आप एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल कह सकते हो, बिकॉज यू आर मैन्युपुलेटिंग. वाई? मैंने बोला था एक ग्रुप को आपने कंट्रोल वेरिएबल ले लिया ट्रेडिशनल मेथड, दूसरे ग्रुप को आपने फ्लिप्ड क्लासरूम से पढ़ाया, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? दोबारा बोलता हूं, इफेक्ट ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम ऑन अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. अचीवमेंट, ठीक है. आपने मैथमेटिक्स के 5 टॉपिक सिलेक्ट किए और उन 5 टॉपिक के ऊपर यू हैव प्रिपेयर्ड वन अचीवमेंट टेस्ट.
मीन्स आपने क्वेश्चन बना लिए, हर एक के 2-2 10 क्वेश्चन बना लिए, वो आपका अचीवमेंट टेस्ट हो गया, राइट. सो एटलीस्ट वन वेरिएबल is manipulated to study the effect on dependent variable. Dependent variable कई सारे हो सकते हैं. आपसे मैं बोलता हूँ to study the effect of flipped classroom on achievement and retention of students in mathematics. मैंने अचीवमेंट टेस्ट, उसी को रिटेंशन टेस्ट, एक्सपेरिमेंट खत्म होते सारी मैंने अचीवमेंट टेस्ट दे दिया. मैंने 20 दिन के बाद वही टेस्ट फिर दोबारा दिया कि भी इस मेथड से कितना वो रिटेन कर पाए. ठीक है, दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए ना. सो इसी तरह आप हैं, रिटेंशन इज द सेकंड वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल. सो ये स्टडी इस तरह से लिखी जाएगी जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी होती है. इफेक्ट ऑफ समथिंग ऑन समथिंग studies. All experimental studies look to determine how one thing affects another. Groups are randomly formed. This is the condition to study comparison. तो रैंडम कैसे रैंडमाइज कैसे करते हैं? या तो लॉटरी मेथड है, या आपने पर्चियां डाली, स्टूडेंट्स ने पिक करी, या आपने कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर से उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया. That is randomization. And control is also exercised on the variable. क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी है कि अगर मान लीजिए आपने सुबह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, यानी फ्लिप्ड क्लासरूम से पढ़ाया, और दूसरे ग्रुप को दोपहर को 2 बजे पढ़ाया ट्रेडिशनल मेथड से, तो ये टाइमिंग जो है फैक्टर, ये आपके परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा. 2 बजे तो खाना खाया होता है, नींद आ रही होती है, तो टाइमिंग यू हैव टू कीप सेम. बड़े सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, यू नीड टू आइडेंटिफाई एक्स्ट्रान्यूअस वेरिएबल्स और कैसे उनको कंट्रोल करना है. एंड यू हैव टू रिपोर्ट इन योर रिसर्च स्टडी ऑल्सो कि मैंने इनको इस तरह से कंट्रोल किया है. To compare the effect of lecture method and computer assisted instruction on the achievement of students in engineering mathematics, or to study the relationship between the temperature inside people's refrigerators and the amount of bacteria on their food. ये experimental research study है. There are other types of research available in the literature. कुछ nomenclature different है. I would like to share those types also. Analytical research. This is you see, analytical descriptive research, you see, attempts to determine, describe, identify what is, while analytical research establishes why it is. Difference है, descriptive research is concerned with what is, and analytical research is concerned with why it is. Descriptive research uses description classification, like examining the fluctuations of Indian international trade balance during this one, whereas analytical research usually concerns itself with the cause and effect relationship. For example, explaining why and how Indian trade balance move in a particular way over time. Quantitative research, to quantify the problem by way of generating numerical data. ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी है. ठीक है, सिर्फ नाम डिफरेंट है. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, लॉन्गिट्यूडनल, सैंपल साइज इज टिपिकली लार्ज. Qualitative research, when we focus on qualitative aspect. Empirical research, where the data is not in the form of numbers. It is basically exploratory research which is used to gain an understanding of underlying reasons, opinions, or motivations.
So case study, observational method, interview, open-ended questionnaire, these are used as qualitative research methods. एंड सैम्पल साइज इज स्मॉल क्योंकि इंटरव्यू ज़्यादा लोगों की नहीं ली जा सकती. देन इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस क्या है? यू सी, you have attended one conference and the you, as a researcher, you want to study the feedback from your attendee on the conference. So you prepare a questionnaire which can measure things like attendance rate, overall satisfaction, quality of speaker, value of information given through a closed-ended question. ये हम आपको देंगे last day वाले दिन. And you can also provide a few open-ended questions to find out what you may have overlooked. What did you enjoy most about the conference? How could we improve your experience? Is there any feedback on the conference you think we should be aware of? So this is quantitative भी आ गया, qualitative भी आ गया, दोनों aspect इसमें आ गए. Conceptual research focus is on concept or theory. It is conducted by observing and analyzing already present information. Doesn't involve conducting any practical experiments. For example, what causes disease? How can we describe motions of the planets? What are the building blocks of matter? So conceptual research. Newton observed his surroundings to conceptualize and develop theories about gravitation and motion. It can be used to answer business questions and solve real-world problems. Empirical research based on the observed and measured phenomena to find out if listening to happy music while working may promote creativity. This is experiment. So then we have a scientific method, a bit of both conceptual research and empirical research. Then we have one-time research. A one-time research is carried out over a single period of time. For example, population researchers. Researcher records information about their subjects without manipulating the study environment. For example, to study to measure the cholesterol levels of daily walkers and non-walkers along with any other characteristics. So across two age groups, more than 40, less than 40 and gender. Okay, दो तरह का सैंपल ले लिया हमने at a single point in time. You can compare many different variables at the same time. It may not provide definite information about cause and effect relationship because these offer a snapshot of a single moment in one time. And we have got longitudinal research. Involves study of sample at more than one point in time or occasion. For example, trend studies or panel studies. Conduct of several observations of the same subjects over a period of time, sometimes lasting many years. ये खासकर मेडिकल साइंस में होती है. Detect developments or changes in the characteristics of the target population at both the group. You can look at the change in cholesterol levels among women more than 40 who walk daily for a period of 20 years. Its design would account for cholesterol levels at the onset of a walking regime and as the walking behavior continued over time. So you can compare. Then one-time research and longitudinal research, ये difference is clear. So मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ. मैं अब I am now moving to the problems. This is the research process we have already studied. Yes. Now आपने अभी ME का thesis किया. What kind of problems you have faced? बताइए. हाँ. साइट फाइंडर साइट है और बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जब हमको वो एक्सेस नहीं है तो उसे परचेज करना पड़ता है. तो वी दैट आल्सो कई बार हम वो रिसर्च कर रहे हो कि जो ऑलरेडी कहीं और कैरी आउट हो गया तो वैसे चले जाती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां से पता चले कि भी इस एरिया में ऑलरेडी किसी ने की हुई है.
हाँ, करवाना। और क्या है? सर कोलैबोरेशन का सर प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग केमिस्ट्री कर रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं तो उसके लिए हमें किसी बायोलॉजिकल लैब पे डिपेंड रहना पड़ता है कि हम अपने सैंपल्स दें, वो एंटी कैंसर की टेस्टिंग करके हमको वापस दें। हमें इन विवो के लिए कहीं और जाना, अपने मित्रों के लिए कहीं और देना पड़ेगा, इन विवो के लिए हमें किसी और इंस्टीट्यूट देना पड़ेगा, तो वहाँ सब जगह से कोलैबोरेशन जो है वो एक जनरेशन काफी तो बड़ा प्रॉब्लम है। आपने ये रिसर्च करने से पहले सोचा नहीं था कि भी ये प्रॉब्लम आ सकती हैं? नहीं सर, उस टाइम पे तो सर काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बना, बहुत अच्छा हमारे गाइड थे वहाँ तक का पूरा, लेकिन जब उसके बाद ट्रिपल आईएम जम्मू में हम लोग जब के लिए भेजते थे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, एक्चुअली वहाँ से उनका ट्रांसफर हो गया जो ट्रिपल आईएम जम्मू में करते थे, और फिर वो उनका जो आपने क्लिनिकल ट्रायल के लिए गए, इसका मतलब ये स्टडी जो है वो एथिकल कमेटी से भी निकली होगी, क्योंकि आप खुद तो डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू कलेक्ट द डाटा अंडर द गाइडेंस। हम लोग को नोवेल कंपाउंड सिंथेसाइज करते थे, साइफर को चेक करने के लिए नोवेल, उसको हम लोग इसमें प्रोसीजर होता था, पहले डाटाबेस पे हम उसको देख लिया, रिसेप्टर पे बाइंड करा के भी देख लिया, उसके बाद उसको सिंथेसाइज किया, एक लाइब्रेरी बनाई, उसको फिर इन विट्रो कराया, इन विट्रो जो बेस्ट निकला उसको एक वो भेजा, तो टॉक्सिसिटी स्टडीज कराई, उसको अगर उसने परफॉर्म वेल किया और उसके लिए आगे अगर जाना चाहे तो वहाँ से दिक्कतें आना शुरू होती थी। हम टाइफर भेजते थे या हम ट्रिपल आईएम जम्मू भेजते थे, ट्रिपल आईएम जम्मू भेजा, फिर जो एकदम बहुत सालों, एक साल लग गया लगते हैं। सपोज एनी अदर पर्सन? हाँ जी, और कुछ? बाकियों का स्मूथ ढंग से हो गया, स्मूथली हो गया? टाइम गेन काफी ज्यादा हो गया इससे, हाँ, टाइम काफी लग गया। सुपरवाइजर से कोई दिक्कत आई हो, सुपरवाइजर से कोई प्रॉब्लम आई हो? तो एक रिक्वायरमेंट जो जर्नल में पेपर पब्लिकेशन की वो भी है, और वो एक ही बार आप भेज सकते हो, अगर उन्होंने कुछ चीजें पॉइंट आउट की, आपने उसको करेक्ट भी किया, आप दोबारा भी भेज सकते हो। वो किसी और को भेजना पड़ेगा। किसी और को भेजना पड़ेगा। हाँ, तो उतनी देर आपको वेट करना पड़ता है, और फिर सुपरवाइजर जो है वो फोर्स करते हैं कि भी आपको या स्कोपस में या एससीए इंडेक्स में छापना है। हाँ, एमई लेवल में भी। आपने पीएचडी किया है? ओके, और किसने किया पीएचडी? आपने किस सब्जेक्ट में किया? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, आपका भी केमिस्ट्री है? अच्छा, कहाँ से किया? ओके ओके। तो अभी जिन्होंने नहीं किया, अभी आप टीचिंग प्रोफेशन में आ गए हैं, प्लीज़ कोई नियर बाई इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाई कीजिए, और इन आवर इंस्टीट्यूट देयर इज पीएचडी क्यूआईपी पॉली स्कीम है। मैंने क्यूआईपी पॉली बोला, पॉली मीन्स पॉलीटेक्निक के लिए है, ठीक है? तो आप प्लीज़ उसको, हाँ, क्यूआईपी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ एआईसीटी है, पॉलीटेक्निक स्कीम, एक इंजीनियरिंग स्कीम है। तो आवर इंस्टीट्यूट इज ए प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर, एंड यू कैन सी कब एडवर्टाइजमेंट आती है तो आप उसको अप्लाई करिए। उसमें उसका ना क्यूआईपी पॉली स्कीम का ब्रोशर वेबसाइट पे पड़ा है, उसमें वेटेज है कि भी बीटेक के इतने वेटेज है, एमई की इतनी वेटेज है, इतने पेपर है तो इनकी वेटेज है, वगैरह वगैरह, फिर हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ठीक है? आफ्टर पीएचडी किया मतलब सर, इज देयर एनी शॉर्ट ट्रिप पोस्ट डॉक वगैरह 2 साल का होता है, मेरे वर्षों के बाहर तो सर कोई स्कोप नहीं है, शॉर्ट टर्म से 6 महीने या 2 महीने कर सकते हैं। वो जहाँ से आपने सीएसआई लैब से किया उन्हीं से पूछिए कि हमने पोस्ट डॉक भी करना है तो आप हमें करवाइए। हाँ हाँ, बहुत लंबा नहीं था, मैंने बाहर लिखा तो सेमिनार वगैरह भी लिखा, तो कह रहे कि अगर आप आ रहे हैं तो कम से कम 2 साल से 6 महीना तो बिल्कुल 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 2 साल तो है। आप सीखोगे हमसे, उसके बाद हम आपसे क्या आउटपुट रहा तो उसमें यस, हाँ, ये थोड़ी कोई सिर्फ सीखना ही है, उनको भी तो चाहिए ना आपके कंट्रीब्यूशन। आईआईसी बैंगलोर में सर बात की, वहाँ पे एक सर है, उन्होंने भी यही कहा कि मिनिमम वो इतना कर सकते हैं कि आप 1.5 साल के लिए आओ, लेकिन उससे कम नहीं। सो मैंने जैसे अभी आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली, सो वी हैव कंडक्टेड लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, एंड आई हैव you see gathered large number of problems, and I have compiled those problems,
So I am now presenting in front of you what kind of problems are encountered by researchers in India. Firstly, the main problem is the lack of a scientific training in the methodology of research. Many teachers, even supervisors, are not aware about the process of research. ठीक है. अभी जो है यूजीसी ने यूजीसी हैज मेड मैंडेटरी PhD coursework in which you have to you see undergo you see one subject called as research methodology, है ना. अभी कुछ इंस्टीट्यूट्स ने ME लेवल पे भी इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है. सो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. सो रिसर्च गाइड्स आर आल्सो नॉट अवेयर अबाउट रिसर्च में. उनको पता नहीं. अभी भी आप देखेंगे यू विल फाइंड कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं उनको लिखना आता. रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखा टू नो. टू नो का मतलब मैंने जान लिया, टू जानना है. क्या करना है वो नहीं लिखा हुआ. जैसे अभी हम आपको लर्निंग आउटकम बताते हैं ना, तो लर्निंग आउटकम की फॉर्म में ही वो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाएंगे. एंड देन उसमें सीक्वेंसिंग क्या, जो नंबर 4 पे करना है वो नंबर 1 पे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है. तो ये उनको नहीं पता है. लुक फॉर सिमिलर स्टडीज एंड कॉपी द मेथोडोलॉजी. इनसफिशिएंट इंटरेक्शन जो आपने मैम ने बोला बिटवीन यूनिवर्सिटी रिसर्च डिपार्टमेंट्स एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, तो रियल जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास नहीं आती. लेबोरेटरीज जो है वो दे डोंट शेयर देयर प्रॉब्लम्स. What issues need to be researched, what data is required for conducting research, and how the study will be useful. It is not. Lack of confidence in business organization that the information or data supplied by them to researcher will not be misused, particularly in case of behavioral sciences या management studies में. तो data share नहीं करते. तो there is no confidence between the researchers. So researcher को पहले एक एप्लीकेशन भेजनी है और he has to say that the data will not be misused. Research studies are overlapping one another, are undertaken quite often for want of adequate information. ये एक प्रॉब्लम है. हाँ, सिर्फ आपने मेथोडोलॉजी यानी मेथोडोलॉजी भी चेंज नहीं करी, जस्ट सिर्फ सैंपल चेंज कर दिया और रिसर्च को जो है वो कर दिया. और यहाँ पीछे एक हमारे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट पकड़ा गया था. केरला इंस्टीट्यूट में एक बच्चे ने ME कंप्यूटर साइंस में थीसिस लिखा और हमारे इंस्टीट्यूट में 2013 में सेम वन वर्ड टू लास्ट वर्ड देयर इज नो चेंज. भैया कॉपी कर रहा है, कुछ तो अकलमंदी कर ले, कुछ तो चेंज कर दे. एग्जैक्टली पूरे का पूरा थीसिस वो पकड़ा गया. वो उस कैंडिडेट को पता चल गया, उसने रिपोर्ट किया. What new you have done since your PhD to your students' PhD? What new you हाँ, have discussed yes. in this paper? ये question आया. आता है. yes. There does not exist a code of conduct for researchers. Manipulation of data, copying of data, और कई बार इंटर यूनिवर्सिटी और इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरीज होती हैं. कि जब आप बोर्ड ऑफ सॉरी ये जो रिसर्च बोर्ड है उसमें सिनॉप्सिस प्रेजेंट करते हो, तो ये मेरे उस यानी टीचर की आपस में राइवलरी होती है कि इसकी वो जो है ना वो लेग पुलिंग करनी, बहुत ज़्यादा खिंचाई करनी है. तो ये इंटर यूनिवर्सिटी इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरीज हैं जो बच्चा फेस करता है. लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग एजेंसीज. Researchers face the difficulty of adequate and timely secretarial assistance, including computational and statistical assistance. जैसे आपको अपने स्टैटिस्टिक्स लगाना है क्योंकि आपको नहीं पता, तो यू फेस डिफिकल्टी. कई बार टाइपिंग या सेक्रेटरियल असिस्टेंस नहीं मिलती. हाई कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग. Once their research is completed, they have to look for its publication. So this is another problem. And the outlook of the researcher or research student changes जब दूसरे स्टूडेंट उनके साथ बात करते हैं. लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग नॉट सेटिस्फैक्ट्री एट मैनी प्लेसेस. जैसे आपने बोला दैट यू डोंट
higher journals हम उसको reach you नहीं कर don't सकते। get हम acts, rules, reports, other government publications in time. जितना अच्छा पढ़ेंगे सर हम उसी को तो मिमिक करेंगे। हाँ. अगर हम 2 का इतना फैक्ट्री के पेपर को पढ़ रहे हैं तो हम 0.5 ही जल्दी Yes. कर पाएंगे। जब हम 8 पढ़ेंगे तब तो हम 4 तक पहुंचेंगे। Yes. Then difficulty of timely availability of published data, unavailability of permission to do research in specific centers, you don't get permission. Okay. So ये कुछ रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं जो पुराने ग्रुप ने मेरे साथ शेयर करी थी. So now I stop here.